Assalamu alaikum and very good afternoon to all of you. It's me, Professor Zara Bukhari. Dr. Fatma is on leave. Okay, so for a while she won't be coming. So for today, I'm taking this lecture instead of her. She was to do tongue and had lost. Uh, if you remember, okay. रह गई tongue, तो tomorrow inshallah Dr. Hiba will do the tongue with you. And I was to do the two remaining salivary glands with you. So मैं अपना lecture दूंगी salivary glands का. Next lecture जो है उसमें we'll have say a gupshup or something, and you can tell me your difficulties, any kind of difficulties that you're facing in this online classes session or anything related to the exam, anything. So we'll have a session, and of course we're going to do a bit of revision as well. So last time भी हमने इसको बहुत डिटेल में किया था because we had plenty of time. एक मिनट इसको दोबारा सिर्फ इसलिए टच करना चाहती हूँ because it is extremely important from your examination point of view, from your practical clinical point of view. Okay? So I want to do what is called Walde's ring. Yeah, Walde's ring. This is simply a lymphatic ring present in the pharynx. So pharyngeal lymphatic ring, also called Walde's ring. इसमें starting from the most cranial part, at the junction of the nasopharynx, roof of the nasopharynx with the posterior wall, basic occiput and the posterior wall of the pharynx. इस junction पे you have the pharyngeal tonsil या nasopharyngeal tonsil, आप जो भी कहना चाहें, ठीक है? Then immediately inferior to that, surrounding the eustachian tube, you have an aggregation of lymphatic nodules. This is called tubal tonsil because it is around the eustachian tube, या pharyngotympanic tube, so it is called tubal tonsil. Give one on either side. You have tubal tonsils. Then over here, approximately over here, between the palatoglossal and palatopharyngeal arches, ये जो part है, this is the palatine tonsil. ये यहाँ पे ये palatine tonsil दिखाया हुआ है. And last but not the least, over here, this is the tongue. ये muscles of the tongue है. This is all we're going to do tomorrow, inshallah. So this is the lingual tonsil. Posterior surface of the tonsil, posterior 1/3 of the tonsil. You have multiple lymphatic nodules on the posterior 1/3 of the tonsil. That is why the posterior 1/3 of the tonsil looks uneven because of the presence of these lymphatic nodules. These lymphatic nodules on the posterior 1/3 of the tongue are called lingual tonsil. Yeah. There's one tongue, so midline में this is the lingual tonsil. ठीक है? Nasopharynx भी एक ही होता है ना बेटा? So in the midline you have the pharyngeal tonsil, but you have one on either side of the tongue. You have the two palatoglossal and palatopharyngeal arches. So the tubal tonsil is bilateral, and ये जो आपकी है palatine tonsil, ये जो tubal tonsil है, you have one eustachian tube on either side because there are two ears. दो कान है ना बेटा, so उनमें से दो tubes निकलेंगे, so वो भी paired होंगी. उनके गिर्द जो ये बनेगा lymphatic aggregation, ये भी paired होगा. And finally ये palatine tonsil, one on either side, so ये भी paired होगा. This is just to show you
the posterior surface of base या base of the tongue कहते हैं या root of the tongue. ये posterior surface. This is the lymphoid aggregations present on it. ठीक है? So this is the lingual tonsil जहाँ पे मेरा cursor है. Okay. अब आगे चलते हैं today's topic. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? Are you clear कि कौन से lymphatic aggregation या which tonsils are paired and which tonsils are single? ये मैंने यहाँ पे स्लाइड पे नहीं लिखा. I've tried to make you understand. Is it clear that way? Because you have to be very clear about this. नहीं? Nobody's listening, so never mind. Yes, ma'am. Thank you, thank you, thank you. अगर समझ आ गई है तो बेटा that is what matters. Because आपका ये MCQ आता है ना कि which of the following aggregations of lymph nodes are single या which of them are paired. यार तीन तो होने से रही. Thank you here. Thank you so much. Salman, Mujib. Thank you all of you. ठीक है? Thank you all of you for participating and for understanding as well. Good. That means you were listening. Good. I'm so happy. Okay. आगे चलते हैं. Let's come to today's topic. छोटा सा है वो भी. Nothing much to do. Submandibular gland. कहने को छोटा सा है, but it is very important. ठीक है? Salivary glands पे से ना. This is very important. अभी आपको इसकी importance का अंदाजा हो जाएगा. देखो बेटा. This is a slide that shows you the position of the submandibular gland, the position that is mentioned in your book. बिल्कुल ऐसे. Posterior one half of the body of the mandible. ठीक है? ये ramus end of the mandible है ना बेटा? ये body of the mandible है. इसका inferior border. Inferior border का देखें ये posterior one half है. Now the gland, submandibular gland, is situated in such a way that part of the gland is lying behind or posterior to the angle of the mandible, extending as far as the posterior half of the inferior border. ठीक है? So posterior half of the inferior border, यहाँ पे you have the mandible का lower border. So part of the gland is below this lower border, posterior half of the lower border, and part of the gland is above, या posterior to the. ठीक है? अच्छा. Then the second landmark is that the floor of the mouth is formed by mylohyoid. Mylohyoid muscle forms the floor of the mouth. ये आपको पता है. Now this gland is present in such a way that part of the gland, in fact the major part of the gland, is lying below the mylohyoid. ये देख लीजिए. This is the mylohyoid का cut section. Part of the gland is lying below the mylohyoid and part of the gland is lying above the mylohyoid. ये देख लीजिए. So the part of the gland that is lying below the mylohyoid is the superficial part of the gland, and part of the gland lying above the mylohyoid is the deep part of the gland. Is this thing clear? ये चीज समझ आई है? आगे चलो. बच्चे ओके, अगर ये समझ आ गई है ना बेटा तो then we move ahead. Thank you Mujib, Sania, Memuna. Thank you my dears. Seher, मैम दोबारा बता दे. Good. I'm so happy कि आप कह रहे हो दोबारा बता दे, because इसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा बेटा. If you get concept. ये देखो, ये ग्लैंड आपको थोड़ा सा हुक शेप लग रहा है. ये सबमैंडिबुलर है, इसको भूल जाइए. सबलिंगुअल है, ये पैरोटिड है, भूल जाइए. We're concentrating on this. This is looking like a hook shaped gland. One more. G. लोकेशन के बारे में. अच्छा ठीक है, मैं ये लोकेशन बता देती हूँ आपको. देखो बेटा,
एक लोकेशन तो ये है जो मैं बता रही हूँ कि ये mylohyoid मसल है. So most of the gland is lying below the mylohyoid. ये इसका superficial part है. But then some part of the gland, about 1/3 to 1/2, is lying above the mylohyoid. ये इसका deep part है. एक तो ये location हो गई, ये deeper location है. Superficially हम क्या देखते हैं? बेटा superficially what we see is कि ये mandible का inferior body है. ठीक है? Body of the mandible, inferior border of the body of the mandible. So you have some part of the gland. ये इसका posterior half है. ये anterior half होगा. I'm talking about the posterior half. So part of the gland is lying below the posterior half of the inferior border of mandible. ये posterior half of inferior border of mandible. Part of the gland is lying below the posterior half. Part of the gland is lying above the posterior half. The inferior border above. So obviously this part which is lying above the posterior half of the mandible, body of the mandible, this will be lying deep to the mandible. या अगर आप दूसरे लफ्जों में कहना चाहें, it's lying medial to the, because ये जो side है on the outer side, this would be the lateral side, और जो mandible the inner surface would be the medial surface, जहाँ medial pterygoid लगा होता है. Okay? अब समझ आ गई बेटा कि मैंने और कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? ओके, थैंक यू सलमान, अब समझ आ गई. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. ओके, आगे चलते हैं. अब मैं उस वक्त से सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स को क्यों बार बार रिपीट कर रही थी बेटा? द रीजन इज कि ये जो डीप पार्ट है of the gland, that is the part of the gland which is lying above the mylohyoid, ये वाला, ठीक है? This deep part of the gland, this is the part from where the submandibular duct arises. ये submandibular duct है, arising from the anterior end of the deep part of the gland. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. Lying on the upper surface of the mylohyoid muscle, ये is the deep part of the gland, and the submandibular duct, which is about 5 centimeters long, arises from the anterior end. The anterior end of the deep part है. ये देखिए, this is the anterior end of the deep part. This is the site from where the submandibular duct arises. ये चीज आई होप आपको क्लियर है. मैं इस खत्म कर लूं स्लाइड को, फिर आगे आपसे बात करती हूँ इस बारे में. अच्छा, अब यहाँ पे बेटा फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड बनाए हुए हैं और ये सबलिंगुअल बनाया हुआ है. कुछ अजीब सा ही है, जैसा भी है. इट एक्सप्लेन्स अ लॉट, रियली एक्सप्लेन्स अ लॉट. इस लिहाज से इट्स अ गुड स्लाइड. ये जो muscle fibers vertically running है ना, these are the muscle fibers of hyoglossus. Tongue का muscle है. We'll do that tomorrow inshallah. Hyoglossus. ठीक है? अच्छा. Now ये देख लीजिए. Running on the surface of the hyoglossus muscle, this is the submandibular duct. Okay? Submandibular gland इसके ऊपर नहीं, उसके posteriorly पड़ा होता है. Submandibular duct इसके ऊपर run कर रही होती है. Plus, please note, this is the lingual nerve. This is the 12th cranial nerve, hypoglossal. So,
The hyoglossus muscle, the superficial surface of the hyoglossus muscle. उस पे आपको ये तीन structures नजर आ रहे हैं from above downwards. You have the lingual nerve, then comes the submandibular gland, the duct of the submandibular gland, and then the third structure is 12th cranial nerve. ठीक है, ये चीज समझ आ गई. Let's move ahead. ये duct है, ठीक है, सबमैंडिबुलर डक्ट है, इसने एंटीरियरली ओपन करना है. अभी आ जाते हैं कि इसने कहाँ ओपन करना है. When it is moving anteriorly, please note the lingual nerve is poking around the submandibular duct. यहाँ पे ये देख लीजिए, बड़ी अच्छी ड्राइंग है. This is the submandibular duct, ये, which is running forwards to open into the floor of the mouth. Okay. This is the lingual nerve. This is the lingual nerve. ठीक है, ये 12th cranial nerve है. So duct, पहले तो it was lying between the lingual nerve and the 12th cranial nerve. But then please note the lingual nerve pokes around the duct. ठीक है बेटा, मैं ये इसलिए आपको बहुत स्ट्रेस कर रही हूँ. ये lingual nerve पहले it goes under the duct and then इसके deep जाके it goes up and supplies. lingual है ना, उसका मतलब है कि ये टंग को सप्लाई कर रही है. lingual nerve supplies sensory fibers to the tongue. sensory में कौन सी sensations होती हैं lingual nerve की? lingual nerve की sensory sensation that supply the tongue are it is touch, pressure, temperature, hot and cold sensations. ये सब lingual nerve की वजह से होती हैं. Not taste. Taste is from cauda tympani. Taste fibers कहीं भी होंगे तो समझ लो cauda tympani है, except for the posterior 1/3 of tongue, यहाँ glossopharyngeal दिया. अच्छा, हम बात कर रहे थे duct की. So the lingual nerve hooks below the duct. ठीक है बेटा, मैं इस पे स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ कि when you remove the sublingual gland, ये gland ये आपने remove की, तो obviously when you remove the gland you have to tie the duct. If you do not remember the relation of the duct with the lingual nerve, so what you do is कि आप इस duct के साथ lingual nerve को भी tie कर देते हो, और जब आप lingual nerve को tie कर देते हो तो what is the result? पेशेंट कंप्लेन करेगा, मुझे ना तो किसी चीज का हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन कोई पता नहीं चलती, मेरे मुंह में गर्म चीज रख दो मुझे पता नहीं चलता. ठीक है, डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? कि बेटा मैंने सेपरेट स्लाइड नहीं बनाई, लेकिन ये आपकी किताब में दिया हुआ है, ये ब्लू प्रिंट्स में ये दिया हुआ है. प्लीज. थैंक यू मेमूना, सलमान थैंक यू, तहजीब थैंक यू बेटा. हमारा गुड, दैट्स वेरी गुड. अगर आपने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है तो दैट मीन्स कि अगर आज इस पे कोई क्वेश्चन आता है या कोई MCQ आता है तो देन यू गोइंग टू हैव नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह. ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं. लेट्स मूव अहेड. डक्ट को ही खत्म किए लेते हैं. Now where does the duct open? Floor of the mouth. एक पहली बात तो ये है, चाहे वो सबलिंगुअल की डक्ट हो या वो सबमैंडिबुलर की डक्ट हो, कुछ भी याद ना रहे तो फ्लोर ऑफ द माउथ को आप लिख ही दें. एग्जैक्ट साइट ऑफ द submandibular gland, the duct of the submandibular gland, ये on either, ये frenulum है ना, frenulum of the tongue, a fold of mucous membrane that
is present on the undersurface of the tongue that connects the undersurface of the tongue to the floor of the mouth. ये सारा floor of the mouth है, ठीक है? So this is the frenulum, fold of mucous membrane that connects the undersurface of the tongue to the floor of the mouth. Acha. Now these are the sublingual papilla. बेटे, this is sublingual papilla, submandibular papilla नहीं है, sublingual papilla है, लेकिन duct submandibular की ओपन करती है यहाँ. Do I make myself clear? Sublingual papilla मैं अभी बताती हूँ क्यों है. Sublingual papilla है where the duct of the submandibular gland opens. बेटा ये सारा जो आपको एलिवेशन थोड़ी सी ये नजर आ रही है ना, कुछ इधर बाकी इधर, this is the sublingual gland lying in the floor of the mouth, deep to the mucous membrane of floor of the mouth. ठीक है? So इन दोनों के साइड पे यहाँ पे जो एलिवेशन प्रोड्यूस हो रही है, this is produced by the sublingual gland, इसलिए इसको sublingual papilla कहते हैं, लेकिन यहाँ पे duct open करती है submandibular gland. Okay, this is lying on either side of the frenulum of the tongue. इसके दोनों sides में, over here and over here. Okay, arterial supply की बात किए लेते हैं. Arterial supply इसकी जो है ना, that comes from submental artery. ये देख लीजिए इधर, ये submental artery है. This will go forwards and supply. This will supply this gland. ये submandibular gland. ठीक है? अच्छा, venous drainage इसको accompany करेगी, drains the submandibular gland and then ultimately goes into the facial vein. ये facial artery जा रही है ना बेटा. This is the facial artery. Okay? Arising from the facial artery is the submental artery. और ये submental artery इस gland को supply करती है. Okay. Lymphatic drainage जो है इसकी goes to the jugulo-omohyoid lymph nodes and from there into the deep cervical lymph nodes. अच्छा जी, अभी तक समझ में आया है? अभी तक do you want me to repeat anything? Because now we come to something that is extremely important, which is the nerve supply of this gland. Yes, ma'am. Thank you, Mariam. अच्छा, चलो, शायद बाकियों को भी आ ही गया होगा. There wasn't much to it, लेकिन अब जो मैं बताने लगी हूँ, that is extremely important. Please, I want you to concentrate. ठीक है? ये drawing मैंने नेट से ली है. This drawing was present in the old edition of your book. ALM की previous editions में थी ये. जो मेरे पास पुराना edition है hard copy, उसमें तो ये थी. But from the newer edition, they have removed this, even though this is a beautiful drawing, which explains a lot. Explains everything, in fact. आप नेट में से देख लीजिएगा. Nerve supply. देखो बेटा, salivary gland है ना, इसमें दो किस्म की आएगी. एक तो इसमें what you called is secretomotor fibers. Those fibers that stimulate the gland to secrete, produce its secretions, उनको secretomotor कहते हैं. वो parasympathetic होते हैं. Secretomotor glands head and neck में, they are always parasympathetic. यानी the fibers, nerve fibers that supply the gland and stimulate the gland to produce secretions, they are called secretomotor and they are always parasympathetic. जहां भी sympathetic supply का जिक्र आएगा, wherever you have sympathetic supply,
यहाँ पे related to the submandibular glands, related to the glands in the head and neck. Wherever you have sympathetic supply, sympathetic is always vasoconstrictor. आपको पता है vasomotor, pseudomotor, pilomotor होता है. अब यहाँ pilomotor तो होने से रहा, ठीक है, ग्लैंड में यहाँ पर सिर्फ वेसोमोटर काम करता है. So sympathetic is always vasomotor. Parasympathetic is secretomotor because it parasympathetic fibers जो हैं they stimulate the to produce secretions. अब नर्व को हम ट्रेस करते हैं, नर्व सप्लाई ऑफ द ग्लैंड, सबमेंडिबुलर की बात कर रहे हैं. The nerve supply comes from the facial nerve. मैं भूल जाएगा ये कौन से आती है, ये हम इंशाल्लाह ब्रेन में करेंगे. Facial nerve, seventh cranial nerve, mixed cranial nerve. Facial nerve से you all know, I've repeated it so many times. Facial nerve की एक branch है which is called chorda tympani. This chorda tympani branch carries, कौन से fibers carry करती है chorda tympani? अभी भी मैंने repeat किया है जी. अब मुझे बताओ ना बच्चों, what kind of fibers, क्या sensations carry करती है chorda tympani? अभी मैंने बताया था, याद करो जी. पैरासिम्पैथेटिक तो होती है, व्हाट टाइप? टेस्ट. थैंक यू मरियम. टेस्ट. सलमान थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आई एम सो हैप्पी. आमना थैंक यू बेटा, बिल्कुल सही है, टेस्ट ही करती है, ठीक है. टेस्ट. हेरा थैंक यू, थैंक यू. ओके, सो ये कॉर्डा टिम्पैनी जा रही है. दिस इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल. प्लीज ये याद रख लीजिएगा कि ओरिजिन इसका फेशियल से है. Then it leaves the facial nerve. Okay? आगे जाके अगली सबस्टेज के सिलेबस में है सेवेंथ क्रेनियल नर्व का इंट्राक्रेनियल कोर्स, वो मैं आपको करवाऊंगी, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि what happens to this nerve. It leaves this nerve, the chorda tympani arises from the facial nerve, but then it joins the lingual nerve. अब ये hitchhiking fibers हैं, ये वही वाले फाइबर्स है, वो C1 जो हमने हाइपोक्लोसिस के साथ ऐड करवाए थे. हिचहाइकिंग, एक गाड़ी से उतरे दूसरे में चढ़ गए, ये वही वाला है. कॉर्डा टिम्पैनी फेशियल की गाड़ी में से उतरी और छलांग मार के लिंगुअल की गाड़ी में बैठ गई. अब इट इज ओनली अकम्पनिंग द फेशियल नर्व, द लिंगुअल नर्व. यहाँ पे लिंगुअल नर्व के साथ उसका और कोई रिश्ता नहीं है. ओके, सो इट अकम्पनीज द लिंगुअल नर्व till the point where the lingual nerve runs into the submandibular ganglion. ठीक है, I'll go back to the previous slide और उसमें मैं आपको दिखाती हूँ what I did not explain. ये देख लीजिए, ये lingual nerve है and hanging from the lingual nerve is the submandibular ganglion. ये देख लीजिए, ठीक है. So hanging from the lingual nerve, you have the submandibular ganglion. Now running with the lingual nerve, you have chorda tympani, fibers of chorda tympani. These chorda tympani fibers now leave the lingual nerve and join the submandibular ganglion. वापस आ जाती हूँ मैं अपनी स्लाइड पे, ठीक है. So now these fibers, when they come across the submandibular ganglion, they leave the lingual nerve, come and relay in the ganglion. अब ये relay कर रही हैं. Parasympathetic अभी तक जो था वो pre-ganglionic fibers थे, pre-synaptic fibers थे. आप जो मर्जी कह लें, ganglion से पहले तो pre-ganglion होंगे, synapse करने, ganglion में synapse करने से पहले उनको pre-synaptic कहा जाएगा. दोनों एक ही चीज है, ठीक है. So they come and relay in the submandibular ganglion. From the submandibular ganglion, postsynaptic fibers या postganglionic fibers arise करते हैं. These postganglionic fibers now they go and supply the submandibular gland. और क्या सप्लाई देगी बेटा? secretomotor. हम अभी तक पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं जो secretomotor fibers देगी, ठीक है जी. एक दफा straight
ये बेटा आपकी किताब में बिल्कुल दिया हुआ है, इसी तरह दिया हुआ है, ठीक है, नॉट वन वर्ड आउट ऑफ योर बुक। मैं पहले पैरासिम्पैथेटिक एक दफा रिपीट कर दूं, फिर हम सिम्पैथेटिक पे चलते हैं। Facial nerve gives rise to a branch which is called chorda tympani. So chorda tympani basically is a branch of facial nerve. This chorda tympani leaves the facial nerve and joins the lingual nerve. The lingual nerve, when it comes to the submandibular ganglion, the fibers of chorda tympani leave the lingual nerve and synapse in the submandibular ganglion. ठीक है जी, over here. They synapse in the submandibular ganglion, and then postsynaptic fibers arise that supply the submandibular gland. These fibers, postsynaptic fibers, are secretomotor fibers. Postsynaptic parasympathetic secretomotor fibers. ठीक है, अब हम आ जाते हैं sympathetic पे. Sympathetic fibers जो होते हैं, they run T1 segment of the spinal cord से, ठीक है, वहां से आते हैं, but they relay in the superior cervical sympathetic ganglion. हमने 3 head and neck sympathetic ganglia पढ़े थे, 3 main in the cervical region. मैं बाकियों की बात नहीं करते. In the cervical region, there were 3 main ganglia in the head and neck: superior cervical ganglia, middle cervical ganglia, inferior cervical ganglia. Inferior cervical ganglia, I told you, joined with the first thoracic ganglia to form the cervicothoracic, or also called stellate ganglia. Okay? So now we are talking about the supply to the submandibular gland. Sympathetic supply to the submandibular gland comes from fibers that relay the superior cervical ganglion. यहाँ से post ganglionic sympathetic fibers, they go and form a plexus around the facial artery. अब ये जो sympathetic fibers हैं बेटा, ये vasomotor fibers होते हैं, vasoconstrictor fibers होते हैं. They are only for the supply of the blood vessels that provide nutrition to these salivary glands, these two. हम इस वक्त submandibular की बात करें. So जो सबमैंडिबुलर को अभी हमने बात की, सप्लाई कौन सी आर्टरी कर रही है? फेशियल की ब्रांच नहीं. सो ये जो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे, दे विल फॉर्म अ प्लेक्सस अराउंड द फेशियल नर्व, और देन फेशियल नर्व की ब्रांचेस के साथ ये नर्व्स आएंगे इस ग्लैंड में. लेकिन पर्पस इनका सिर्फ ब्लड वेसल्स टू द ग्लैंड, उनको vasoconstrictor fibers प्रोवाइड करना. Is this nerve supply clear to you people? अब आ जाइए इसमें. बेटा नर्व सप्लाई में जो भी प्रॉब्लम है, थैंक यू मेमुना, थैंक यू मरियम. अच्छा बाकी सो रहे हैं, ओके कोई बात नहीं, सो जाओ. वाह 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 वाह, हेरा, सानिया, फैसल, सिंपैथेटिक रिपीट कर, मैं सिंपैथेटिक रिपीट कर देती हूँ. थैंक यू. अच्छा जी बेटा, देखो हेड एंड नेक में मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक गैंग्लिया मेनली 3 है. यू हैव 7 गैंग्लिया, बट उनकी फ्यूजन की वजह से ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले उसमें, लेकिन मैं इसको फिर आपको याद करवा दूं कि बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ दीज गैंग्लिया you end up having 3 ganglia, sympathetic ganglia: superior cervical ganglia, middle cervical ganglia, and inferior cervical ganglia. ठीक है? Now you have sympathetic fibers coming to the superior cervical ganglia. Superior cervical ganglion में ये relay करते हैं. T1 के ये फाइबर होते हैं, first segment of first thoracic segment के. Superior cervical ganglion से they arise
postganglionic fibers arise and they form a plexus around the facial artery. अब why the facial artery? अभी मैंने आपको बताया था जो sympathetic fibers होते हैं, they are vasomotor. That means they make the blood vessels constrict. Okay? अब facial artery के plexus क्यों बन रहा है? The reason is कि arterial supply to submandibular gland comes from facial artery. That is आपकी अभी हमने इसको किया था branch submental branch of the facial artery जो थी वो उसको supply कर रही थी. So you have a from the superior cervical ganglion postganglionic sympathetic fibers arise that encircle or they form plexus around the facial artery. Is facial artery की branches they supply submandibular gland. So these sympathetic fibers run along the branches of the facial artery and supply the submandibular gland. क्या करेगी supply? Gland को नहीं करेगी बेटा. ये जो blood vessels और आगे उनकी branches जो gland को supply कर रही हैं, basically ये सिर्फ blood vessels को supply करती हैं. To control the amount of blood coming to the gland. Vasoconstrictor fibers है ना बेटा. When more blood is required तो ये vasoconstrictor fibers ये relax कर जाएंगे. They won't act. And when less blood is required by the gland, when the gland is not in a mode of secretion, less blood is required. That is when these fibers are stimulated and the blood vessels to this gland, which is facial branches, facial and auditory branches, these then constrict. और बताओ और इसमें कोई बात जो जी अब क्या है? Thank you. You're welcome, my dear. You're always welcome. And now comes a very small, little, tiny, little gland. Before I go any further, मैंने इसकी थोड़ी applied आपको बताया. देखो बेटा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको. ठीक है? This is just at the cost of repetition. क्योंकि इस पे question आता है. ये भी once again आपकी किताब के blueprints में ये है. Now, this is the margin of the mandible, body of the mandible, the lower margin. And you see, part of the gland is below and part of the gland is above this margin. Now, in cases of disease of the submandibular gland, if this submandibular gland has to be removed, एक तो मैंने आपको बताया ना कि जब इसकी duct को काटते हैं या when you tie it off, so this nerve, the lingual nerve, is in danger because this can be ligated with the duct. एक तो ये हो गया. बेटा दूसरी बात ये है कि if you remember the coverings of the face, यहाँ पे nerves आ रही थी, facial nerve की branches. Over here you have the marginal mandibular, which is running along the margin of the mandible. Up, in order to remove the submandibular gland, you have to make an incision over here. Okay? When you make this incision and you make an attempt to remove the, while you make this incision, this marginal mandibular nerve is in danger. Okay? So you have to be careful about two nerves. एक तो ये कि आप marginal mandibular, you have to be careful about that. दूसरा, you have to be careful about the lingual nerve. ये चीज क्लियर है? समझ आ गई बेटा? थैंक यू बेटा. इसलिए क्योंकि ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, बट अब इस स्टेज पे ये जरा रेलेवेंट थी. ओके. थैंक यू फैजी, थैंक यू सो मच. आगे चलते हैं.
sublingual gland पे चलते हैं बेटा. A small gland, a deeply placed gland which is lying in the floor of the mouth. देखो बेटा, ये हमने बात की थी कि ये फ्रेनलम है. Fold of mucous membrane that connects the undersurface of the tongue to the floor of the mouth. ये सारा floor of the mouth है, ठीक है. And please note that the undersurface of the tongue is covered by mucous membrane, and this mucous membrane या mucosal fold is then reflected onto the floor of the mouth. Now lying in the floor of the mouth, anterior aspect पे, ठीक है. ये genioglossus है, ये mandible है. So between the genioglossus and mandible, इस corner पे ये है sublingual gland, ये, ठीक है. अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, please note the position of the gland. It is lying on either side of the midline. Not only that, अब ये frenulum है, mucous membrane, whatever, nothing passes through this frenulum. Not only, even the blood vessels will not pass through this frenulum. तो ये जो sublingual gland, ये जो elevation आपको नजर आ रही है, sublingual gland passes anterior to this frenulum, and the glands of the two sides, they join each other, so that now a U-shaped or a horseshoe-shaped gland is formed. ठीक है. अभी तक ये पोजीशन ऑफ द ग्लैंड समझ आ गई है बेटा? Have you been able to understand the position of the gland? रिपीट कर देती हूँ बेटा, मैं रिपीट करती हूँ. अच्छा बेटा, ये under surface of the tongue है, inferior surface of the tongue है. It is covered by mucous membrane. So ये जो fold of mucous membrane है, this is that connects the midline or under surface of the tongue to the floor of the mouth. ये through and through. You can feel your own. Feel कीजिए. This fold of mucous membrane is called frenulum. Okay. Triangular fold of mucous membrane that connects the undersurface of the tongue to the floor of the mouth. Now, remember one thing, okay, nothing passes through the frenulum. Good blood vessel भी नहीं pass करती. ठीक है? Now, this is the sublingual gland of this side, the sublingual gland of this side. This sublingual gland resting on the floor of the mouth. This is covered by mucous membrane, a fold of mucous membrane. Okay? This fold of the mucous membrane is sublingual fold कहते हैं इसको. अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिए कि अब this sublingual gland, ये यहाँ पे indicate किया हुआ है. This is lying between the genioglossus and the mandible. ये mandible का cut है. तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है. Anteriorly, आप देख लीजिए, anteriorly. ठीक है. और दूसरी बात, this sublingual gland of this side runs in front of the frenulum and joins the sublingual gland of the other side. अब यहाँ पे आपको you are getting the impression कि ये जो frenulum है, this is coming up to the lip. ऐसा नहीं है. अपने frenulum को खुद feel कीजिए. It is only in the posterior half of the floor of the mouth. Anterior aspect of the frenulum नहीं आना. The frenulum is a very short fold of mucous membrane. मुझे बताओ, सबने अपना frenulum feel किया है? Tell me. फिर आगे चलते हैं. Let it be yes or no. Have you been able to? Yes, ma'am. ठीक है. अब आपको समझ आइए कि ये जो frenulum, ये
This diagram that way is deceptive. ठीक है, ये सही इंप्रेशन आपको नहीं दे रहा. This frenulum is at the back of the floor of the mouth. अब that is why, और ये जो gland है, this gland is in the anterior part of floor of the mouth. ठीक है, so gland जो है, glands of the two sides, they join each other and form a U-shaped structure. अब बात क्लियर हुई है? Now do I make myself clear? Thank you, Reha. Okay. ठीक है, अगर समझ आ गई है तो फिर that's very good. That's very good. अच्छा, डक्ट्स की बात कर लेते हैं. बेटा पहली बात तो ये है कि unlike other glands, salivary glands or any other glands, this gland does not have one single duct. Multiple ducts होती हैं इसकी. ठीक है, they open all over the floor of the mouth. But usually the usual site is they open over here. ये sublingual fold है ना, the fold of mucous membrane that covers the sublingual gland is called the sublingual fold. So इस sublingual fold में different sides पे these ducts open and the saliva is poured into the mouth. ठीक है, they even, some of them even open in the submandibular duct. सबमैंडिबुलर डक्ट में भी ओपन करते हैं. ओके, अब एक चीज याद रखिएगा, फ्लोर ऑफ द माउथ की बात कर लेती हूँ. ये फ्रेनलम है, लाइंग ऑन अदर साइड ऑफ द फ्रेनलम. ये देख लीजिए, ये जो ब्लू सा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये डीप लिंगुअल वेन है. इफ यू लुक at your, open your mouth and look at yourself in the mirror, not just yourself, only your mouth. Okay, look at your mouth in the mirror. On either side you see lots of veins, bluish आपको ये area नजर आता है. This is because on either side of the frenulum you have this deep lingual vein, और भी surrounding veins होती हैं that are draining into the deep lingual vein, but this is the main vein that you have in the floor of the mouth. Arterial supplies की जो है ना, सबलिंगुअल आर्टरी मेनली, ये देखें, ये लिंगुअल आर्टरी है. बेटा लिंगुअल आर्टरी को आइडेंटिफाई करने का एक बहुत अच्छा तरीका है. As soon as it arises from the external carotid, it forms a loop. ये देख लें, it is forming a loop. और फिर वो सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी रहती है. And it goes to the tongue. नाम ही लिंगुअल है, so it is going to the tongue. Okay. ये आपको मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, यहाँ पे स्पॉटिंग में हेल्प करेंगे. ओके, सो ये लिंगुअल हो गई. सो ब्रांच ऑफ लिंगुअल आर्टरी, इसको सबलिंगुअल आर्टरी कहते हैं, वो इसको सप्लाई करती है. ये सबलिंगुअल आर्टरी, ये देख लीजिए, ये इसको सप्लाई कर रही है. प्लस ये जो सबमेंटल आर्टरी है, दिस आल्सो सप्लाइज. सबमेंटल आर्टरी वाज अ ब्रांच ऑफ फेशियल, ये इसकी भी ब्रांचेस जाती हैं. सॉरी, ठीक है. So arterial supply is from a branch of sublingual, and a sublingual artery which is a branch of lingual, and submental artery which is a branch of facial. Nerve supply पे आ जाते हैं. Nerve supply वही है, बिल्कुल वही है जो हमने सबमैंडिबुलर ग्लैंड में पढ़ी. मैं इसको फिर रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको हम आगे ले जाएंगे. फेशियल नर्व, फेशियल नर्व की ब्रांच cauda tympani. Cauda tympani leaves the facial nerve, joins the lingual nerve. Hitchhiking fibers for the lingual nerve. It joins the lingual nerve
goes and relays in the submandibular ganglion. Ye I am talking about parasympathetic secretomotor fibers. Secretomotor fibers. Okay. Facial से cauda tympani. Cauda tympani joins the lingual nerve. Lingual nerve के जो fibers हैं, when they come across the submandibular gland, तो ये जो cauda tympani के fibers हैं, they leave the lingual nerve and they go and relay in the submandibular ganglion. Now these fibers from the submandibular ganglion, they go and supply secretomotor fibers to sublingual gland. Submandibular को भी यही करती है, sublingual को भी यही करती है. ये था इसका secretomotor. ठीक है, parasympathetic secretomotor. अब हम vasoconstrictor fibers की बात कर रहे हैं. They are the same as well. T1 segment of the spinal cord, they go and relay in the superior cervical sympathetic ganglion. वहां से postganglionic fibers, they go and form a plexus around the facial artery. ये जो submental supply कर रही है इसको, ये facial की branch है. So facial से branches आते हैं that go and supply the sublingual. So this plexus is formed around the branches of the arteries that supply the sublingual gland. So इसकी भी गिर्द branches की गिर्द बनेगी, इन branches के गिर्द भी sympathetic plexus बनेगा that then go and supply the sublingual gland, not the sublingual gland, the blood vessels in the sublingual gland that are secretomotor. ये बात क्लियर है? So basically nerve supply दोनों की मैं उस पे आ जाती हूँ. Venous drainage बेटा मैंने मेंशन नहीं की because venous drainage का obvious route जो है वो आपको समझ आ गई होगी. Submental arteries के साथ they go to the facial vein and some supply also goes to the via the sublingual. Facial और sublingual veins दोनों जो हैं वो यहाँ पे internal jugular में drain करती है. Anything else? Sure. मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा. इसके अलावा भी if there is anything that you want me to repeat from the pharynx, वो जो tonsils है, pharynx के tonsils, अभी तो मैं Waldeyer ring के आपको बता देती हूँ, फिर pharyngeal tonsil भी मैं आपको बता देती हूँ because बेटा ये बहुत important होता है because tonsillectomy unfortunately is a very common procedure. And you bread and butter है ENT सर्जरी का, लेकिन इस bread and butter में bleeding बहुत ज्यादा होती है और वो क्यों होती है मैं अभी बता देती हूँ. Pharyngeal lymphatic ring, ये देख लीजिए, ring of lymphatic tissue. ठीक है, so Waldeyer's ring भी कहते हैं. So the Waldeyer's ring is in the pharynx, surrounding the all around the pharynx. अब होता क्या है इसमें? You have this tonsil, nasopharyngeal या sorry, pharyngeal tonsil है. This is present at the junction of the base of skull and ये देख लीजिए, ये this is the base of skull, basisphenoid, and this is the posterior wall of the nasopharynx. So junction of the roof of the nasopharynx with the posterior wall of the nasopharynx, this is the pharyngeal tonsil.
ये एक कंटिन्यूस टॉन्सिल है, लार्ज टॉन्सिल बट कंटिन्यूस अक्रॉस, तो ये दो में डिवाइडेड नहीं है. So this is a single tonsil that you see in the roof. अब आ जाते हैं ये, this is the opening of the eustachian tube. Eustachian tube आपको बताया था, या auditory tube आप जो भी कहना चाहें, connects the middle ear cavity with the nasopharynx. तो बेटा दो कान है ना, दो ट्यूब्स होंगी. अगर दो ट्यूब्स हैं तो इस ट्यूब के गिर्द lymphatic aggregation है. This lymphatic aggregation around the tube, ये, this is the tubal tonsil. Since you have two tubes, because you have two ears, तो फिर ये दो tubal tonsil होंगे. Okay? अब आए थे palatine tonsil पे. ये palate है, ये palatoglossal fold है, and ये palatopharyngeal fold है, and between the two you have tonsils. अब ये आपको बताया था, ये palatine tonsils जो है ना, they are lying on right and left side of the tongue. So अब tongue की अगर दोनों sides पे दो palate हैं, palate दो tonsils हैं, palatine tonsils, फिर ये automatically two tonsils, one on either side. And then comes the posterior surface of the tongue. You have just one tongue. So उसी की posterior surface will have a single large lymphatic continues from the superior surface going on to the posterior surface. ये सारा ये lingual tonsil है, posterior one third. So that will be single. So pharyngeal tonsil is single. Tubal tonsils, you have two, right and left, because you have two tubes. Palatine tonsil, one on either side, you have two palatine tonsils. And finally, you have one single lingual tonsil. ये ये बात समझ में आ गई है? ठीक है बेटा? ओके, ठीक.